Hello everyone, welcome back to my channel Gracious Womanhood. Thank you so much for stopping by once again. Today I'll be doing a product review for you all, and the product today that I have is this Biotic Advanced Ayurveda's Bio Morning Nectar Visibly Flawless Skin Moisturizer. So I have been loving this for quite some time, and that is why I wanted to review this particular product with you all. So today's review is going to be a little different. आज का जो review है वो थोड़ा सा different होगा. Why? Because I have written down and noted down some points with me that I'll be sharing with you all. एक एक करके हम उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें सारा ही रिव्यू जो है वो कवर हो जाएगा. द फर्स्ट पॉइंट दैट इज व्हाट इज द प्रोडक्ट. सो एज आई टोल्ड यू, दिस इज द स्किन मॉइस्चराइजर दैट यू कैन यूज फॉर योर फेस एंड योर बॉडी. डज द कंपनी क्लेम? कंपनी क्या बता रही है इस प्रोडक्ट में? सो इट इज ऑल मेंशन राइट ओवर हियर. कंपनी सेज that it is a refreshing lotion that hydrates and nourishes skin. So हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, नरिशमेंट की ज़रूरत होती है. सो कंपनी कहती है कि ये हाइड्रेट करता है, नरिश करता है हमारी स्किन को. इट रिड्यूसेस एंड प्रिवेंट्स द अपीयरेंस ऑफ डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन एंड फाइन लाइन्स. जितनी भी हमारे यहाँ पे रिंकल्स आ जाते हैं या स्किन पे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं या कोई फाइन लाइन्स पड़ जाती हैं विद एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, तो उन सबको भी रिड्यूस करती है और आने से भी रोकती है, प्रिवेंट भी करती है. कीप्स स्किन फ्रेश, लाइट एंड ब्राइट. डेफिनेटली इट गिव्स दिस क्लेम दैट स्किन जो है वो ब्राइट हो जाती है. लाइटनिंग पे मैं विश्वास नहीं करती. आई डोंट बिलीव इन स्किन लाइटनिंग, बट डेफिनेटली येस, इट सेज दैट इट कीप्स योर स्किन फ्रेश. बहुत ज़्यादा फ्रेश रखती है और ब्राइट रखती है, एक ग्लो बना रहता है चेहरे पे. So the price of the product. The price of the product is also mentioned over here, and this is for rupees 280, and this is 190 ml of product. So I guess it's a good quantity that you are getting in this price. It's a good moisturizer, a good day cream that you can use at this price. Next, let us talk about the packaging. If you all can see, first this comes in this plastic packaging. Then inside this we have this plastic bottle. This is what I liked the most about the product, that it's not going to break. ये टूटने वाला नहीं अगर गिर भी जाता है तो. This bottle is really handy. आप इसको आसानी से कैरी भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात एक प्लास्टिक बॉटल है तो बहुत ही ज़्यादा सेफ है यूज़ करने के लिए. द पैकेजिंग, द कैप here is also of plastic. Then if you next point that we need to discuss is that what is the consistency of the product. प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी कैसी है? तो इफ़ यू ऑल कैन सी, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे. इस प्रोडक्ट को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, उसी के बाद मैंने आपके लिए रिव्यू वीडियो बनाई है. This is how the consistency of the product is. It is neither too watery and nor too thick. ना ही ज़्यादा watery है, ना ही ज़्यादा thick है. बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ है. स्किन में ईजिली ब्लेंड हो जाती है. अगर आप अपने हैंड्स पे अप्लाई करें, अपने बॉडी पे, अपने फेस पे अप्लाई करें, तो बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो जाती है. बिल्कुल ब्लेंडेबल फॉर्म में एक क्रीम है, और ब्लेंड होने के बाद आफ्टर गेट्स ब्लेंडेड यू डोंट फील स्टिकीनेस और ऑयलीनेस एट ऑल. बिल्कुल. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हाउ टू यूज इट. Now the company itself claims, they have written it down over here, that you need to apply evenly over cleansed face and neck morning and night. Day and night अपना face wash करने के बाद आप एक थोड़ा सा amount लेके, just a pea size amount will work. You just need to apply it on your face and you're good to go. Coming to the most important point, that what is my personal experience or what is my personal review with the moisturizer. So मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो when I started using it तो बहुत जल्दी डिफरेंस आना नहीं स्टार्ट हुआ था, बट विथ टाइम I started noticing कि फेस पे जो ड्राइनेस थी सबसे पहले तो वो जाना शुरू हो गई, जो मेरा सबसे बड़ा इशू है, बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन. एंड विद टाइम जो ड्राइनेस थी वो खुद से ही जाना शुरू हो गई. स्किन में स्किन मॉइस्चराइज रहने लगी, नरिश्ड रहने लगी. एंड ऑल्सो आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड नोटिसिंग दैट जो फाइन लाइन्स मेरे फेस पे आना शुरू हो गई थी, थोड़ा सा रिंकल्स पड़ना शुरू हो गए थे बिकॉज ऑफ द वर्क, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, वो सब भी रिड्यूस होना शुरू हो गए. स्किन जो है आपको अभी भी दिख रहा है, दो आई हैव मेकअप ऑन, बट स्टिल जो स्किन का चार्म है, जो स्किन का ग्लो है वो मेंटेन्ड है. स्किन बहुत ही अच्छी ब्राइट लगती है अब. और फेस पे अगर मैं नेचुरल लाइट में बाहर चली जाऊँ तो इट शाइन.
and it glows apparently, which is just because of the moisturizer that I am using. I don't know, is it a value for money? Yes, definitely it is a value for money kind of product, क्योंकि 280 रुपीज़ में अगर आपको इतना बड़ा बॉटल एक मॉइस्चराइजर का मिल रहा है जिसमें से बस एक पी साइज अमाउंट आपको दिन में और रात में यूज़ करना है, then I think that this is definitely a value for money product. Will I repurchase the product or not? तो I'm definitely going to repurchase the product. मतलब without any doubt मैं इसको वापस से खरीदने वाली हूँ as soon as it gets over. Not just me, also my husband uses the same moisturizer on his skin. So basically this is both for men and women, दोनों ही use कर सकते हैं. So many people will have this question that where to buy this product from. So I'll give a link in my description box down below. You can just go to the particular link and just purchase your product if you want to. So एक final review जाते जाते, ये एक 280 रुपीज़ का 190 ml का प्रोडक्ट है, एक मॉइस्चराइजर है जिसको आप दिन में और रात में दोनों टाइम ही यूज़ कर सकते हैं. मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही अच्छा रहा है बिकॉज माई स्किन इज़ ड्राई, सो इट नरिशेज माई स्किन, इट मॉइस्चराइजेज माई स्किन, इट हैज़ मेड माई स्किन मोर चार्मिंग एंड ब्राइटर. फाइन लाइंस भी रिड्यूस करना स्टार्ट करती है. थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ को शो अप होने में, और मुझे इसको यूज़ करते हुए आई गेस इट्स बीन 2 or 3 months नाउ. तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जब मैं आपके साथ इस रिव्यू को शेयर कर रही हूँ. Must go and definitely purchase this product. So much for stopping by to watch this review video. I'll be coming back with so many another review videos, and also I just want to mention, if you haven't seen my COVID recovery video, my COVID experience video, then please watch it. I'll mention the link down there in my description box. Please go and watch it as it may be useful for a lot of you, for a lot of people who are suffering with COVID-19. Thank you so much, and we'll be meeting again. Goodbye.